Okay, so quantum computing is a way of doing calculations which is faster and more powerful than whatever computers that we have now, and it makes use of the laws of physics, the laws of quantum, the laws of quantum that we say. It makes use of that laws of physics in it, and then it helps us to make some calculations which are in a really fast and super organized manner. So, for example, just say, like, suppose our ATM, the pin is 4. Like, if you remember, you have to choose any random 4 numbers. Now, if you forget your ATM pin, then you have to try nearly 10,000 different. In the worst case, you have to try 10,000 different numbers to get to the correct number. But in quantum computing, you can actually do all of that at once. Like, you can do all these 10,000 computations in just one query, if you say. So now you can see that it becomes very fast because you're doing a lot of calculations at once. Of course, it will have its own restrictions and it will have its own, you'll have to do a lot of post-processing and those things which are there. But just to understand it, just think of it like quantum computing will help you in doing many calculations, which will be very fast. Right. And it will not only help in, and it will have many applications later in the future in healthcare, bankings and all those things. Right, sir. Thank you for speaking to Republic and also successfully breaking it all down in such simple terms. I'm sure that's no easy task, but thank you for giving us your time. Thank you so much. Thank you. Viewers, this young girl swam 34 kilometers non-stop. At just 16, Gia Rai is not just making waves, but also rewriting the entire history. Braving freezing waters in relentless currents, this Mumbai teen swam solo across the English Channel in 17 hours and 25 minutes. She is the youngest para swimmer to conquer this feat. But here is what makes it even more extraordinary. Jiya, who has autism spectrum disorder, becomes the first in 150 years to do so. And guess what? This is not her first achievement. She just bagged the prestigious award, which is Wowza Adaptive Performer of the Year 2024. This makes her the first Indian open water swimmer to receive such global honor. Born to an Indian Navy sailor, Jiya's journey began as a therapy but quickly turned into something far bigger. In the year 2022, she was the youngest and the only female swimmer in a 6-member relay team that took on an insane 1,100 kilometer swim from Mumbai to Goa. All of this completed in just 11 days. No wonder she was honored with Pradhan Mantri Rashtra Bal Puraskar, which is India's highest award for young achievers. With every swim, Jiya is proving that no challenge is too big and no dream too far. I spoke to Gia Rai and her father a short while back. Listen in. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक से बात करने के लिए. जिया भी हैं आपके साथ में. कैसी जर्नी रही है ये? बहुत चैलेंजेस आए होंगे. इंग्लिश चैनल को स्विम करना एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है, उस बारे में कुछ बताइए सर. सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बुलाया और हमें ये मौका दिया कि हम जिया की जर्नी को शेयर करें. और रही बात इंग्लिश चैनल की, इंग्लिश चैनल दुनिया का सबसे टफेस्ट चैनल माना जाता है ड्यू टू अनप्रेडिक्टेड वेदर, स्ट्रॉन्ग करंट, और वहां पे जो कोल्ड वाटर रहता है, इस वजह से इंग्लिश चैनल दुनिया का सबसे टफेस्ट चैनल माना जाता है. इंग्लिश चैनल की तैयारी तो 5 जनवरी 2019 से शुरू हुई थी, जब जिया ने पहली बार नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था. वहीं से हमारा ड्रीम था इंग्लिश चैनल. हाँ, हमें सारे चैलेंजेस पता थे और वो चैलेंजेस इतने बड़े थे, और सबसे बड़ा चैलेंज था कि जिया एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. तो जो चीज एक नॉर्मल बच्चे को समझाने में 1 या 2 साल लगने थे, हमें पता था कि ये चीज जिया के लिए 3 से 4 साल लगने थे. बट एक चीज हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था
ये अगर जिया को कोई चीज समझ में आ गई तो फिर वो भूलेगी नहीं। और एक्सक्यूशन जिया का हमेशा सबसे स्ट्रांग है। जिया का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट था कि जिया कभी गिव अप नहीं करेगी। और पता था कि इंग्लिश चैनल जो 14 से 15 घंटे की स्विमिंग है, आफ्टर 8 to 10 आवर के बाद ह्यूमन जो बॉडी है वो हमारा साथ छोड़ती है, सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से काम होता है। तो वो कुछ हमारे पास स्ट्रांग पॉइंट भी थे, कुछ वीक पॉइंट पे थे। बस एक ही चीज था कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डेडिकेशन। एज ए पेरेंट हमें जिया पे बिलीव था और हमारा डेडिकेशन पूरा था और जिया का पूरा कोऑपरेशन था कि हम जो भी प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। और जब उससे पहले हमने 4 से 5 ऐसी स्विमिंग प्लान की थी, जो मुंबई में फर्स्ट थी एलिफेंटा टू गेटवे ऑफ इंडिया, जो 14 किलोमीटर की दूरी थी, जिया ने 3 घंटा 27 मिनट में पूरा किया। फिर हमने 21 किलोमीटर की स्विमिंग अरनाला फोर्ट टू बसरी फोर्ट, जो 7 आवर 4 मिनट में कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद वर्ली सिंगली टू गेटवे ऑफ इंडिया, जो 36 किलोमीटर की दूरी थी, जिया ने 8 घंटे 40 मिनट में स्विमिंग किया था। ये ऐसी स्विमिंग थी जिसको हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर सर ने अपनी मन की बात में ट्वीट किया था, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। यही से हमारे जो ड्रीम थे, जो हमने 2019 में देखे थे, हमें लगा यस हमारी प्रिपरेशन राइट टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। जिया, आपके लिए एनी वर्ड्स, कुछ भी बोलना बहुत कम है। बहुत ज़्यादा अचीव किया है आपने इतनी छोटी सी उम्र में, और आपने शायद सबको दिखाया है कि कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है अगर आदमी की हिम्मत, इंसान के अंदर जो जज्बा है वो उन प्रॉब्लम से बड़ा है। तो थैंक यू सर रिपब्लिक से बात करने के लिए। जिया, बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सर। In an unusual incident, a woman has been detained for dragging an 8-year-old boy out of the lift of a residential society. The boy objected to her pet dog entering the elevator, after which she lost her cool and dragged the boy out of the lift. We have with us the mother of the child to shed some light on what happened. I spoke to Kanika Arora, who is the mother of the 8-year-old, a short while back. Listen in. मैम, थैंक यू, धन्यवाद आपका रिपब्लिक से बात करने के लिए। बहुत अनफॉर्चुनेट है जो इंसिडेंट हुआ, हमने वीडियोस देखी है उसकी। आप हमें डिटेल्स बताइए, क्या हुआ एग्जैक्टली? मैम, बच्चा अपने ट्यूशन क्लासेस से लिफ्ट से घर पे आने के लिए ग्राउंड का 0 दबाना भूल गया एंड वो 25th फ्लोर पे चला गया। देन उस लेडी ने अपने डॉग्स को ओपन करा हुआ था और वो बच्चे को अग्रेसिव हो गई एंड शी स्टार्ट बीटिंग हिम एंड उसने बच्चे को बहुत ज्यादा कॉलर से पकड़ के करा एंड बाहर ले जाके मारा, क्योंकि बाहर लॉबी में कैमरा नहीं था। फिर उसने पास पड़ा पाइप से उसे मारा, उसे ब्रूसेस हो गए हैं सारे। देन अगेन उसने उसको लिफ्ट में धक्का दे दिया और अब्यूजिव लैंग्वेज बोली, अब्यूज करा और बच्चा घबराते हुए घर आया। तो हमें बच्चे के फेस से पता लगा, तब हमने ये फुटेज उसकी निकलवाई है एओ से। जी मैम, आप फिजिकल असॉल्ट के बारे में भी कुछ बता रही थी। उन्होंने यस मैम, यस मैम, ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं है। मतलब ये लेडी का ये कहना है कि पुलिस स्टेशन तो मेरा सेकंड होम है, तो मेरे लिए वहां जाना और वहां से आना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये वो रेगुलरिटी में कब से विद लास्ट 4 to 5 ईयर से करती हुई आ रही है। अब जाके ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है तो मैंने ये स्टेप उठाया और मैं स्टेप बैक नहीं लूंगी। और पुलिस अभी स्टिल FIR तो हो गई है, लेकिन अभी हमें मतलब एज सच सपोर्ट नहीं कर रही है। उसे अननोन में डाल रखा है। उस लेडी का जो नाम है वो हाईलाइट नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा वो हमें नहीं समझ आ रहा मैम। हम इतने ट्रॉमेटाइज हैं, बच्चा इतना पैनिक कर रहा है, इतना ट्रॉमेटाइज है, वो इतना डरा हुआ है कि हम लोग क्या करें, हमें अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम स्टेप बैक नहीं लेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता मैम। जी मैम, पुलिस के साइड से, सोसाइटी के साइड से, जैसे आप कह रही हैं FIR दर्ज हुआ है पर उस पर कोई एक्शन नहीं है, सोसाइटी के साइड से कोई एक्शन, कोई मदद? मैम, सोसाइटी ने पूरा मुझे सपोर्ट किया है, सबका पूरा सपोर्ट है। यहाँ पे 1400 फैमिलीज रहती हैं, सब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले FIR हुई है एंड वो हो के देन फिर रिटर्न होगी और उनपे इतना ज्यादा एक्टिवनेस किसी ने दिखाई नहीं है। बट दिस टाइम मैम, मैं नहीं चाहती कि ये जो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी और के बच्चे के साथ भी हो या किसी बड़े के साथ हो, किसी के साथ भी हो, क्योंकि जो वो लेडी है वो मोलेस्टेशन का बोल
बोलकर, रेप केसेस डाल दूंगी ये बोलकर, एंड वो नेकेड होने की धमकी देती है, बहुत कुछ करती है मैम. सो मेनी वीडियोज आर देयर ऑन इंटरनेट, ऑन माई फोन एज एविडेंस. मैं आपको दे सकती हूँ. वो बहुत, मतलब इस टाइम वो शी इज अ मॉन्स्टर एक्चुअली. वो कुछ भी कर सकती है. तो अभी हम एक्शन लेना चाहते हैं ताकि सब सेफ्टी से रहे. President Donald Trump on Wednesday warned Ukrainian President Volodymyr Zelensky that he better move fast to negotiate an end to Russia's invasion of Ukraine or risk not having a nation to lead at all. The rhetoric from Trump towards Ukraine comes amid an escalating back and forth between the two presidents and rising tensions between Washington and much of Europe over Trump's approach to finally settle the biggest ongoing conflict on the continent. Trump's sharp U-turn on his ties with Zelensky, with statements like, and I quote, "A dictator without elections," has made the world wonder whether Vladimir Putin is coming out as the biggest gainer alongside Trump. He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, yes, sir, to say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast, because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. I'm joined by Ruslan Emayev, who is the editor at Russia Today. Thank you for speaking to us, Ruslan. And I want to ask you, do you think that Putin is emerging as the winner, especially after Trump 2.0 has taken over? Thanks for having me. Well, first of all, I must say that I'm very impressed by how swiftly and rapidly the Trump administration is moving to actually resolve the crisis in Ukraine, sidelining European countries, sidelining Ukraine as well. Well, effectively avoiding all the unnecessary back and forth between all of the different countries and moving the process to what it really matters, what the conflict is really about. That is the relationship between Russia and the West, Russia and the United States in particular. That being said, when you're asking if Putin is emerging as the ultimate winner of the conflict, well, I don't think anyone had doubt when it comes to the crisis in Ukraine who would be the ultimate winner. I would want to draw your attention to something more important, in my opinion, is that right now with the negotiations in Riyadh, we observed some start of the changing international system, something that will be forming after the end of the crisis in Ukraine, something that we'll call probably post-Ukraine war system. Right. That's what's important. Also, if Ukrainian President Volodymyr Zelensky puts up his papers and leaves the post, do you think then this war will finally come to an end and will culminate? As I've mentioned, I don't think that this crisis and this conflict has been about Zelensky. I don't even think that it's been the objective of Moscow or Russia to remove Zelensky from power. The conflict ultimately is about the relationship between Russia and the West and the United States. Russia has been vocal about its dissatisfaction about the West, the US in particular, moving and building up its military infrastructure in Ukraine and moving the NATO closer to Russia's border. That's what matters. The conflict will end when Russia secures that, or when the terms and conditions of the peace will be satisfactory to Russia in this particular regard. I don't think Zelensky has anything to do with that. So the rhetoric that we've heard from Trump in the last couple of days is more about, in my opinion, pushing Zelensky to actually negotiate. Right. Thank you so much for speaking to us, Ruslan, and those are some great insights indeed. Thanks for joining us on the broadcast. Pleasure.
A convicted serial rapist, Ramesh Khati, now accused of raping an 11-year-old speech and hearing impaired girl in Madhya Pradesh's Rajgarh district, was arrested in a joint operation by the state police along with forces from Rajasthan and Uttar Pradesh. However, he was acquitted in another case where the trial court initially awarded him a death sentence. Viewers, in another mid-air horror, two small planes collided in southern Arizona. Unfortunately, at least two people have lost their lives. As per reports, one of the planes landed uneventfully while the other one hit the ground near a runway and caught on fire. Keeping politics aside, Congress leader Alka Lamba took a moment to cherish old memories of Delhi Chief Minister Rekha Gupta. The Congress leader shared an old photo from 1995 when she took oath as Delhi University Students' Union President and Gupta took oath as General Secretary from ABVP. Now, leaving you with the visuals of exercise Cyclone 3, the elite special forces of the Indian Army and the Egyptian Army showcase skills in counter-terrorism operations, heli-borne operations and urban warfare in joint counter-terrorism drills. Watch this as I bid goodbye. The Limitless India Youth Hackathon. Call for entries. Category 9. AI and Machine Learning. AI is the battlefield of the future, and India must just not compete but dominate this. I'm excited to see Republic Media Network bring together young minds to bring out their newest ideas in this exciting field of AI. I want to see how your ideas can change India's future by using this limitless technology which can drive innovation, power economies, and truly change the face of the world. I'm delighted that the Republic TV is doing a program which is titled appropriately Limitless India, which includes inclusive India. India has been limitless in thought because it never circumscribed its thoughts that this is the only way to go. We are limitless in our thought, in our reach, in our inclusiveness. And I am happy that such a great initiative is being undertaken. All my best wishes and blessings to the Republic TV and Arnab. The Limitless India Youth Hackathon. Call for entries. Category 6. Digital Economy. I'm super excited about Republic TV's Republic Plenary Summit, where they're inviting